बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? तुम ना ठीक ठाक हो? उम्मीद करना है कि ठीक ठाक हो सो। अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो ईमान जो सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ जी। खैरी मेरी हाँ। एक नवा दिहाड़ा जनाब, अज नवी तारीख अज हो गया जुमा। मौसम यानी कि झक्खड़ चाड़े तो निक्की निक्की बारिश भी विच लेनी तो धुप भी चढ़नी तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐ तको जनाब एक होया हथा में लाया सी गजीबो, ये झखड़े अज पट्टी सटिया, ये मुड़शी तो ठपना पैसी क्योंकि इसने जो मैं पेच लाए से और निकली गए सारे। एक खुली गया यानी ये ठपना पैसे मुड़ी था। चलो मुड़शी ऐसा कुछ कर रहे हैं। जुम्मे ना टाइम होना पिया माड़ी तरफों सारे की बहुत बहुत जुम्मे की मुबारक जी। जुम्मा मुबारक सारे की। जुम्मा पहले पढ़िए जुम्मा तब मुड़शी तो फिर इस तरह कुछ करने ऐसा भी तैयार होना पिया, लेट ना कराई सटा तो बारिश भी लगी भी निकी निकी तो पहले जुम्मा पढ़ी छा तो फिर इसमें कुछ कर जी वापस अच्छी गई किसरा पैना पाया। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने वाला है सुनने वाला है। चलो हाँ जी व्यूअर, टम्परेचर दसना पाया 14 पर विद स्टिल झक्खड़ भी बहुत ज़्यादा है। तारीख अज है 21 हूँ समय तो ऐसा चलिया तो जुम्मा पढ़ने वास्ते। हाँ जी व्यूअर, कुछ मस्जिद ने कोल गड्डी इतना दूर ही खलाई चलिया क्योंकि उतना बाद मैं वक्त पैसी तो उतो मुड़ना पैसी तो पहले इतने खलाई चलना झक्खड़ चाहिए खड़ना खलन नहीं देना बल्कि टूरन नहीं देना। ये बंदे जुम्मा पढ़ी तो वापस आई गए, असा दुई जमात परसा इंशाअल्लाह। ठीक है हेलो हाउ आर यू? माशाल्लाह आन दो सरकार आन दो जो लगी आवाज आसी। Come on brother, come on. गड्डियाँ घटाने बाइक रुकियाँ नहीं रुकनियाँ इन्होंने चलो एक बंदा बैठा हुआ ड्राइवर अगली गड्डी से गड्डी को नहीं आया। ये तो जनाब रमज़ान का टाइम टेबल नाल मैं इतने ही उधर असली उन्हें खेलने वाला हमारे को सेहत नहीं ठीक रहनी बस वैसे बिस्मिल्लाह। जुम्मा मुबारक है। जुम्मा मुबारक जी, जुम्मा मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है?
आज और गड्डी फसाई हुई। वालेकुम सलाम पापा, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत ठीक है? आज को जुल्ले ने। चलो जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तबीयत ठीक है, बुखार भी है तो रेस्ट करना अंकल लगे सुने बड़े इसी कोरोना इसके में तो मस्जिद ना अच्छा कपड़ा पर करना जा ये बोलो लम्हे तो कम है ना क्या पूछ रहा हूँ नाल टेस्ट भी करो ना। टेस्ट भी फंस गई हैं जी साड़ियाँ। बड़े से बात तक के बुजुर्ग गड्डी फंसी गई। पूरे 2-3 गड्डियाँ से फंस गए ना सुनी था। ऐसा जुड़ गया अंदर कुछ सुता शुता पड़ गया। चलो मैं तो नहीं लगा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين والفرقان الحميد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the sustainer, the provider of the entire universe and whatever it contains. Endless peace, blessings and salutations upon our final prophet, our master, our guide, our role model, none other than Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and his family and his companions and those who follow him. It is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that on this beautiful day of Jummah Mubarak, He allowed us to come into His house and to worship Him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts our prayers and the prayers of all of those across the world, insha'Allah. Ameen. My respected elders, brothers and youngsters, as you are aware, we are drawing ever so closer to the blessed month of Ramadan Mubarak. That month which is the month of fasting, the month of blessings, the month of the Quran. From this week, the timetables of the different masajid are available. From our masjid, it is available and printed as well. And I would request that on your way leaving, you collect that timetable and make your routine in the month of Ramadan suit that timetable. Whatever we are doing, many of us will still be working, the youngsters will still be at school. But our routines should fit
around the timetable for the month of Ramadan Mubarak. Make an extended effort. These are only 29 or 30 days. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Ginti ke din, days of counting. We start from the first, and before we know it, Ramadan, it departs. It is an opportunity for us from now to prepare, to take out that time. We know when the last 10 nights will be there. Let us take some time off work. Let us make an effort to make a routine in this month to connect to the Quran al-Kareem. Every individual sitting here has no excuse in the month of Ramadan that they cannot connect with the Quran al-Kareem. Whether that is after Sahri, whether that is after Fajr, maybe. Let us make an effort to recite the Quran, to connect to the Quran. The masajid have made arrangements for Taraweeh prayers, organizing huffaz, all this goes on in the background. Organizing huffaz, making arrangements, allocating times, allocating the recitation portions. For us as the youngsters are here, let us come ourselves and bring our children as well. Bring our children to listen to the Quran in the month of Ramadan Mubarak. Outside Ramadan, no center, no masjid has an arrangement for Taraweeh. This is exclusive to the month of Ramadan Mubarak, where different parts and different portions of the Quran are being recited. Let us make that effort to come, and now we cannot even complain about the time, as the fasts are short, and the time for Isha is not very late. So let us make an effort that we come, we bring ourselves, our children. And another point I want to mention today is my respected elders, brothers and youngsters. Alhamdulillah, Allah has blessed us. Countless blessings in this country. There are people that me and you know. I'm not talking about charities. I'm talking about people me and you know as individuals. Wherever that may be, whichever countries that may be, let us support those people from now. Don't wait for Ramadan to come and we wait for the last 10 nights. Let us make sure that those people we know are less fortunate, they also have food for suhoor and iftar in their homes. We also provide for them. And when we provide for them, Allah subhanahu wa ta'ala will grant us even more. For the one who provides for others, this is the giving, the quality of Allah subhanahu wa ta'ala to give. Jahan par bhi ho, aap logo ko jante khud, you know yourselves, families, whether it may be your relatives, whether it's not your relatives. Your relatives have a great right above you to provide for them, to make sure that as our houses will have the food and drink, we have already prepared. The offers are already on in the supermarkets. And we have prepared, we have started to buy. So as long as we are sharing here as well, many people, alhamdulillah, even in this country, they give dates, they give different things to share with their neighbors, with their family members. And yes, it is a great thing that we are doing here as well. And we should encourage that, especially for our youngsters, to make them understand Ramadan is a time of sharing. Ramadan is a time of giving. But also, let us not forget those that are not in front of us. We are all aware, around the world, there are families that are looking forward. They are not sure where is their sahri, where is their iftari coming from. So let us be from those people. If we can, let us provide that, inshallah. And those that are planning to take out their zakat as well, make an arrangement from now. Do not wait for Ramadan to start. Make the intention now, make the calculations. How is it possible that Allah subhanahu wa ta'ala gives to us, but when it comes to giving zakat, we want to minus and we want to subtract? Let us be generous in giving. One of the pillars of Islam is zakat. And many people take it out in Ramadan. So make the intention from now and you will have the reward of giving in Ramadan. Make the intention so those people receive your donations before the month of Ramadan starts. Abhi se tayyari kar le.
the sadaqat, the zakat, whatever it is that you are planning to take out in Ramadan, do not delay and wait for Ramadan. Do it from now, so it receives those that are due, those are the mustahiq, those that are the right people to receive those donations, inshallah. Ameen. آله وصحبه أجمعين برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी भी जुम्मा पढ़ी रहे हैं, निकली आए बाहर, जनाब बंदे ज़्यादा निकली है बड़ी दा जुम्मा। अच्छा जुलिया स्टिल ट्रैफिक थी है जी इधर, बड़ा ले हूँ जुम्मा ख़त्म हो गया, ट्रैफिक खत्म हो जैसे। टम्परेचर ने अज 14 पर यानी 14 पर सर्दी कोई नहीं, पर झक्खड़ चाहिए खड़ना, हवा ठंडी थी लगनी कई बारी, और आज टम्परेचर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और जहाज भी और से दस जहाज़ की रौनक लगी हुआ ठीक है भाई गुलफराज, फिर ना जुलिया जे अज तक मैं नाश्ता नहीं किया हूँ, जासा नाश्ता टिका शिका ला सकना, मेहरबानी बहुत शुक्रिया। ना फ्राइडे आज जुमेल दा माड़ा पराठा पक्का हुआ सी, इंशाल्लाह मिलसा जी फिर जरूर बशर्ते जिंदगी दुआवां याद रखे, अपना बहुत ख्याल रखे, मिलते हैं इंशाल्लाह। रमज़ान च लगा कर सी ना जी महफिल साड़ी, पकौड़े शोड़े बनाया कर, पापा सिकंदर आने पकौड़े बनाया कर, मैं ठीक है जरूर अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है जी फिर अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी वीवर, ब्रेकफास्ट टाइम से बताया फ्राइडे का दिहाड़ा हमारे को पराठा होना, यानी मैं पराठा खाना मैं अज पराठे का दिहाड़ा है जुम्मा। ब्रेकफास्ट करने होता अच्छो नाल थोड़ा जहा सालन ने अंडा चाह शाह लगी सी, बाकी ये चीज़ा कोई पुरानी फिल्म लगी वो तकना गया नाल कर गया नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी वीवर, बारिश लगी भी फिर दसनी उसी उसे खरा कोई कैमरे पर बारिश लगी हुई। मैं जुलिया एक निक्की माड़ी जड़ी वेल्स पन्नी वो लगी इचनी, एक राती आई सी लंडन वाली वेल्स वाली अज लगी च नहीं, अज साढ़े घर पार्टी है, फिर यानी निक्कियां माड़ियां चिल्ला बेचने वाला पार्टी होनी, जी एक निक्की कार होनी वो फिरने वास्ते पार्टी ने इंतजाम करनी, फिर ये सारिया भैन बे तो पार्टी करनी अज वाले दिहाड़ा फिर साढ़े घर पार्टी हो जानी, जिधर जद भी अच्छा दिनों पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन स्टेशन पर स्टिल बारिश लगी हुई जी, ये तो किसी न किसी तेज़ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। खैरी मेरी पहुँची आई हैं, ट्रैफिक हुई भी, बारिश भी लगी हुई, बारिश 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 बारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी वीवर, अल्लाह करा बची गया वह, त्रुटा ना वह इसकी वापस टकड़िया फिर तकड़िया क्या होना इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आओ पता लगा बची गया कोई चीज़, बाकी तो सारा ठीक ही दिसने गया। अच्छा ये लत्त त्रुटी किस नालों, ये मैं तक की होनी ओहो केड़े पास टट्ठा ते केड़े पास त्रुटा लत्त गई किधर ऐसे त्रुटी गई अल्लाह की वजह मोनी। हाँ जी तुम एंजॉय करो ये पार्टी, तो मैं दूसरी पार्टी तक जुलिया। हाँ क्या हाल है थोड़े? तू खेना कोने पे आजकल ला बैठा मैं बक, क्या वजह है? कोई गुस्से च ने? मूड कौन नहीं पे जी, ठीक है ठीक ठाक। हाँ कौन तो क्या हाल
थोड़ी नमाज ऊपर से ना आज टाइम नहीं आया। रीब क्या हाल है? ठीक ठाक। इधर भी पार्टी इधर भी पार्टी तो सब पार्टी करो घर मैं जुलिया ने मामे काले खान नाल खुदा उधर पार्टी कर बड़ी पार्टी पर मैं हेलो बेबी अभी हा रानी बहुत सियानी ये सुती रानी आ रेला अभी हा रानी। हाँ जी व्यूअर इतों लाई उड़िया वो दूई चीज़ जी लाई सी गज़ीबो फिलहाल तो ये ब्लॉग मैं अजा ने इतने ख़त्म करना है वो फिर जा जाएगी आप तो इंशाल्लाह आज इस वक्त 2 ब्लॉग लबसा एक और जगह मैं जुड़िया पार्टी पर वो भी बनासा तुम शेयर करसा इंशाल्लाह जुमे ना ब्लॉग मैं इतना ख़त्म करना है। एक गज़ीबो हूँ कल कुरै तकना है मौसम थोड़ा ठीक हुआ झक्खड़ शक्खड़ खल है बारिश खल है तो फिर लासा इंशाल्लाह। हेलो जी असा निकल लगे चंगा सही तो खाओ चॉकलेट से दावत करो असा जुलिया ठीक हो हां अल्हम्दुलिल्लाह। इधर कार जी पार्टी होनी पई है तो पीछे सीजन वाई कहंदे ने असा जुले हैं जनाब हूं लेकिन असा रोस्टेल दावत पर मैं माड़ी दावत उधर आज। हाँ जी व्यूअर्स स्टिल पार्टी जारी है खाई पीता हूँ गप्पा मार रहे थे तो त्रै जवान इधर बैठे हुए तो बस हम मैं घर लाई आया था उसकी फ़ोन करो ना मी का बता मैं कौन सिलसिला टाइम तक 10:15 हो गए 10:30 10:15 हो गए। वो बने आदि क्या हाल है ठीक है तू क्या लाया कुछ लेना लाया मामा ने लाया कौन ये सारे नसीर ना निकाया जी।